Morning students, welcome to video session of fluid mechanics 2. In the previous class we were discussing about one sec. Okay, sorry. So in the previous class now we are discussing about I think aerofoil, lift on aerofoil, right? So we'll move on to the second part of this first unit, that is unsteady flow. So basically, if you see the unit 1, it has two parts, that is A, fluid flow around the submerged objects, and B, unsteady flow. So we just completed that first part. So now we will move on to the second part, which is very simple one, and it doesn't take more time. Hardly it takes some 2-3 classes. Okay? So let's start with the this thing. Like in this particular topic, or in this particular part, we are going to discuss about types of unsteady flow, flow through openings under varying head, and celerity of elastic pressure wave through fluid medium, water hammer phenomena, rise of pressure due to water hammer, and surge tanks and their functions. Okay? So in this particular class, we'll mainly concentrate on types of unsteady flow and also flow through opening under varying head. Once again, it has two cases. So one case we are going to discuss in this particular class. Okay. So let's start with the introduction to the topic. See, basically, to understand what is unsteady flow, let's see what is steady flow so that we can easily understand what is unsteady flow. The type of flow in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density, depth of the flow or discharge, etc. at a point do not change with the time is called as steady flow. See, steady means without change. Correct? So that means something you consider a flow, a fluid flow, whether it is air or wind or water or any other liquid. Okay? समझो basically let's consider there is a flow in a pipe में एक पानी का flow जा रहा है, ठीक है? So in that particular this thing, if you take a if you find the fluid characteristics such as whether it is velocity of the water and the pressure of the water and the density of the water and the depth of flow of water and the discharge and if you're taking all these if you're trying to find out the characteristics of fluids, all these characteristics at some particular point, and those values are not going to change with the time. Samjho, there is a okay, I will do. समझो there is a pipe connection, ठीक है? तो pipe connection के पास आप क्या कर रहे हो? Like there is a one particular point, ठीक है? I am going to consider this is one particular point. ये point आपने consider किया है, ठीक है? So same I'll do one thing. I'll draw one more the same pipe, ठीक है? Okay, and I'm taking the same point, same location. So only difference is समझो this is at 2 PM, ठीक है? And this is at 3 PM. समझ में आ रहा? So that means same pipe है, एक 2 PM है, एक 3 PM, मतलब 2 बजे आके इस point के पास आपने velocity of the flow find out किया. Okay, I'll just change it. Okay, this is समझो पानी का flow जा रहा है. ठीक है? सो आपने क्या किया, आप 2 बजे आके इस पॉइंट के पास इस जो भी फ्लूइड जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो इस पॉइंट के पास आपने उसका वेलोसिटी चेक किया, प्रेशर चेक किया, डेंसिटी चेक किया. ये दिस 3 आर वेरी मेन पॉइंट्स. डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, ये चेक किया. सो वी गॉट सम वैल्यूज. वही 3 बजे आके भी उसी पॉइंट के पास वही पैरामीटर्स चेक किया, तो सेम था. So that means this type of flow where all these characteristics, fluid characteristics doesn't change with respect to time. ठीक है? So then that type of flow is called as a steady flow. समझ में आ रहा है? ठीक है? So that means what exactly it tells means dv by dt, that is velocity with respect to time, at x0, y0, z0. That means if you are taking any fluid in the 3 directions, ठीक है? All the x coordinate, y coordinate, z coordinate, all these things, velocity का x coordinate, y coordinate and z coordinate.
with respect to time is equal to 0. Similarly, you take pressure with respect to time is equal to 0. Similarly, you take density with respect to time is equal to 0. This is what steady flow means. Okay? So now you go to, you can say here, I written here x naught, y naught, z naught are the fixed point in the fluid field. Okay? That is coordinates. Second one is unsteady flow. Unsteady flow में क्या होता है? It changes. The type of flow in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density, depth of flow, discharge, etc. at a point change with respect to time. So same explanation जो भी दिया था, सिर्फ इधर change नहीं होता, इधर change होता है. So you can see this is dv by dt is equal to 0. Either dv by dt is not equal to 0, dp by dt is not equal to 0, and d delta divided dt doesn't equal to 0. d rho by dt, okay, is not equal to 0. All velocity, pressure, density, depth of flow, discharge, anything you take. Okay? So this is called as unsteady flow. So now the chapter is about the unsteady flow. We are not talking about the steady flow, but to understand this unsteady flow, we just compared with what is exactly steady flow. So within unsteady flow, there are different types out there. Okay? So types of unsteady flow भी है. So जो diagram मैंने ऊपर अभी draw किया था, the same thing I am showing here. So you can see there is same pipe is there. I have fixed one point. So I'm in particular this point I'm checking velocity, pressure, density, depth of flow, Q, all these things. Okay, समझो at 5 p.m. I'm considering, and the same thing at 6 p.m. same point, same parameter I'm checking. Both अगर equal है तो it is steady flow है, अगर both values change है तो it is unsteady flow. ठीक है? So now we'll move on to the types of unsteady flow. See, इसमें there are three types of unsteady flow out there. The first one is a non-periodic unsteady flow. So by words only it will tell non-periodic. That means it is not like period. See, देखो अभी आप classes लेते हो, periods correct रहता है, like 9 to 10, 10 to 11. Like everything is fixed. The flow it is fixed. Exactly पता रहता है कि कब पानी का फ्लो आने वाला है, कब प्रेशर बढ़ने वाला है, like something like this. ठीक है? So non-periodic बात कर रहे बोले तो you don't know exactly what is going to happen, or it is not properly planned. ठीक है? So non-periodic unsteady flow. First of all, it is unsteady flow. उसमें भी it is non-periodic है. So example for non-periodic unsteady flow is when you turn off the valve. So समझो पाइप का valve जो रहता है, आप कभी भी जाके ऑफ कर सकते हो. It is not fixed it. करेक्ट है? ऐसा नहीं है कि अभी ऑफ होगा, ऐसा कुछ नहीं. कभी भी जाके आप ऑफ करोगे, पानी पी लिया, टप ऑफ कर दिया, या पानी उधर भर गया टैंकी में तो बंद कर दिया. So like that, this type of examples is nothing but non-periodic unsteady flow. ठीक है? So this type of problem does not need to be analyzed. See, when we suddenly turn off the valve, this sudden turn off will cause water hammer. Okay. See, this particular thing is not at all planned. So not to be like analysis करने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है? Because you don't know when it is going to happen, how it is going to happen, or something like that. ठीक है? So when ये वाटर हैमर है ना, ये सेपरेट टॉपिक भी आता है. अब उस टाइम पे मैं प्रॉपर से एक्सप्लेन करता हूँ, बट इतना याद रखो राइट नाउ कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टर्न ऑफ दिस वॉल, जब नल को जाके आप बंद कर देते हो, या जो भी खेती में पानी छोड़ा रहता है, पाइप में पानी आता रहता है, आप जाके उसको रोटेट कर देते हो, ऑफ करते हो, या जो भी है नल टैप का रहने दो, या जो भी आप अगर पानी फ्लो हो रहा है उसको जाके आप जब ऑफ करते हैं ना, so there is sudden off किया था. ठीक है? There is phenomena is going to occur in that particular time. So that is called as water hammer. ठीक है? So we are going to discuss this water hammer in the later stage. So water hammer is the force that travels through a fluid when it suddenly stops. Obviously, when suddenly the flow is stopped, there is a force is generated, and that force is called as water hammer. ठीक है? And you are probably heard it from, you have used an old shower, turn the water off first. So all these things you may be 100% you are experienced. ठीक है? सडनली जब आप पाइप ऑफ करते हो तो एक साउंड आता है, धड़क, ऐसा पाइप हिलता है, या मतलब ऐसा थोड़ा आवाज आता है. So there is nothing but it's called as water hammer. So you'll hear the pipes bang. This can be a real problem, concern sometimes. So since if the force is okay. So what he is telling is, see, you can't ignore this particular thing, especially when it comes to some particular locations or something like that. Because see, if that particular force is, if it is more, then it may damage the entire pipeline system also. See, normally आपके कैसा है कि नल ऑफ कर दिया तो ठीक है, एक ही पाइप है तो नो प्रॉब्लम.
समझो it is connected with a lot of things. ठीक है, एक मेजर अगर आप लिंक के बारे में बात कर रहे हो, so then it may cause a lot of damage to the entire pipeline system. So that's why it has to be analyzed properly. ठीक है, so that's why I told we'll see all those with the diagram, with videos, we'll see in the this thing. ठीक है, so that is about non-periodic unsteady flow. So second one is the periodic unsteady flow. So that means it is the unsteady flow, but it is like, you know, it is like proper. ठीक है, फर्स्ट ये आएगा, बाद में उसके बाद ये आएगा, ऐसा इट इज लाइक प्रॉपरली प्लान. सी periodic flow is based off an flow change that has a pattern that will always repeat. So it has a pattern and it keeps on repeating. आप एक बार चालू कर दिया ना तो वो पैटर्न कंटिन्यूस चालू रहेगा. सो एग्जैक्टली पता रहेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा. ठीक है, so this makes this type of flow easy to represent with a time equation. Obviously if you know the pattern, then it can be like equate to the time equation के साथ इसको represent कर सकते हो. करेक्ट है. सो मतलब लाइक 5 बजे ऐसा रहेगा, 6 बजे ऐसा रहेगा, या 5 मिनट के बाद ऐसा रहेगा, 10 मिनट. तो यू कैन कंपेयर विथ और यू कैन रिलेट विथ द टाइम इक्वेशन. सो एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ फ्लो अकर्स इनसाइड कार इंजिन्स. सो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, जब आप कार इंजिन्स में देयर आर फ्लूइड्स आर देयर, वेदर इट इज लिक्विड और रहने दो, गैसेस रहने दो. So once if you switch on the machine or the automobile, so there is a pipe system or all those things where that fuel pump होता रहेगा. It is like repeat होता रहेगा. करेक्ट है. एयर गैसोलिन मिक्सचर इज इंजेक्टेड इनटू सिलेंडर. तो इधर से एयर आएगा, इधर से गैसोलिन आएगा, दोनों मिक्स होगा, आगे जाएगा, देन बर्न होगा, देन वंस अगेन सेम थिंग, इट विल बी कंटिन्यू. इट इज लाइक, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट इज लाइक ए पैटर्न. ठीक है. Air gasoline mixture is injected into a cylinder. This cycle continuously repeats, allowing the engine to develop the power. जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे गाड़ी का, ये कंटिन्यूस ऐसे चलता ही रहेगा. ठीक है. So this is an example for this periodic unsteady flow, or even sometimes surge tanks में भी ऐसा होता है. Forget about the water hammer. The third one is random unsteady flow. So here it is, first one was like non-periodic था. ठीक है, it is not properly planned, and this is periodic था, but this third one is random. कभी भी हो सकता है. Even you don't have the control. Like random unsteady flow. See, random unsteady flow is the hardest type of unsteady flow because it is random. It is impossible, or it is very difficult for you to analyze because you don't know exactly what is going to happen. ठीक है. So that's why, since it is random, generally won't be able to write a time equation. Obviously you don't know, you can't compare or you can't relate with the time equation and all. ठीक है. Allow you to analyze the problem. So this type of flow occurs in a turbulent flow, but it is normally absent in the laminar flow. So basically all this type of random unsteady flow happens in the turbulent flow, because turbulent flow में आपका flow पूरा डिस्टर्ब रहता है, तो कभी भी हो सकता है. ठीक है. So as the result, if the flow is turbulent, you can expect that there will be a random unsteady flow that will affect the results of analysis. ठीक है. So that is what, like if it is a unsteady flow, turbulent flow है तो random unsteady flow होने के chances रहता है, and it may affect the analysis. जो भी analysis कर रहे हो सकता है. Example is turbine, high head gate. All these things are some of the example where exactly this random unsteady flow may occur, or it will occur. ठीक है. So this is about the unsteady flow. Now we are going to talk about the what I told, the second point in this particular part, that is flow through openings under the varying head. So flow through openings under a varying head. So that means इसमें दो cases है when time required for emptying a tank through a small opening. This is the case one. Time required for emptying a tank through a small opening. So flow through openings under varying head. So you can see there is a tank is there and there is a small opening is there. This is nothing but it is called as orifice in terms of fluid mechanics. So through this the water is going to, or whatever the fluid is there in this particular tank, it is going outside. So you're going to see, obviously the head, whatever it is there, the starting when it is closed, the head will be somewhere here, then it keeps on changing, varying head. It keeps on varying, right? As the discharge continues, flow continues, this head is going to keep on reducing. So that is what flow through openings under varying head. So first case is you are going to find out the time required for emptying the entire tank. अगर समझो
there is a opening of some particular area and there is some particular head on this orifice, and how much time it is going to take for to empty this particular fuel from this tank. So that is we are going to see in this particular case. ठीक है? Okay, consider a tank containing some liquid up to a height of h1. So okay, you consider one tank. So there is that particular tank is filled with some fluid, whatever the fluid, maybe water, maybe diesel, or maybe gas, whatever it is. It is filled with some liquid or some liquid. Sorry, not gas, some liquid we are talking. And till the height कहाँ तक वो भरा है इस टैंक में, that is let's consider that is H1. ठीक है? Let an orifice is fitted at the bottom of the tank. Okay, there is an orifice here at the bottom of the tank. ठीक है? It is required to find the time for the liquid surface to fall from the height H1 to H2. Okay, we need to find the time, how much time it is going to take in such a way that the liquid surface, that is from H1 to H2 आने के लिए कितना टाइम लगेगा. जैसे आप ऑरिफाइस ओपन करोगे लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम H1 टू H2 तक आएगा. ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे पानी बाहर निकलेगा तो ये टैंक का हाइट कम होता आएगा. तो जब H1 टू H2 आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना. ठीक है? सो लेट A is the area of the tank. So let's, this capital A is the area of the tank. Small a is the area of the orifice. So small a is the this orifice का area. H1 is the initial height of the liquid. Obviously it is the initial height. पहले पानी इधर तक भरा हुआ है, correct है? H1 is the initial height of the liquid and H2 is the final height of the liquid. Obviously इधर से जब पानी फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इधर से नीचे थोड़ा टाइम के बाद इधर आके रुकेगा. So this is your final height. So you need to find from H1 to H2 आने के लिए कितना टाइम लगेगा. So T is nothing but time in seconds for liquid to fall from H1 to H2. ठीक है? Hope आपको समझ में आ रहा है. Now let at any time the height from orifice is h and let the liquid surface fall by a small height dh in the time dt. समझो okay, H1 H2 स्टार्टिंग वाला और फाइनल पॉइंट है. समझो at any time सम टाइम पे आपका जो लिक्विड का हेड था h. ठीक है? जस्ट मतलब आपने ऑरिफाइस ओपन किया है, फ्लूइड जा रहा है, बट सम पर्टिकुलर टाइम पे उसका हाइट आया था h के पास. सो दिस इज योर h. ठीक है? एंड इन टाइम dt, ठीक है, इन टाइम dt एक स्मॉल अमाउंट हाइट कम हुआ, दैट इज dh. ठीक है? सो दैट इज लेट at any time the height of the orifice is h and height from orifice is h and let the liquid surface fall by small height. ठीक है? तो मतलब इधर से इधर स्मॉल हाइट dh कंसिडर करो, गिरा, और फ्रॉम ईयर टू ईयर आने के लिए इट टुक टाइम dt, वेरी स्मॉल टाइम dt. ठीक है? सो नाउ देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिविंग द टैंक इन टाइम dt. ओके, मतलब इधर से इधर आया कितना टाइम लिया, dt टाइम लिया, और इधर से इधर कितना हाइट हुआ, dh. सो इतने टाइम में लिक्विड कितना लिक्विड डिस्चार्ज हुआ. ठीक है? the when volume of liquid leaving the tank in time dt, कितना वॉल्यूम टैंक से बाहर गया ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन dt और dh में. करेक्ट है? सो दैट इज नथिंग बट डिस्चार्ज dq इज इक्वल टू एरिया इंटू dh. वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना, एरिया इंटू हाइट. सो हाइट कितना है, dh है, एरिया कितना है, दैट इज व्हाट आई रिटन, एरिया इंटू dh. करेक्ट है? सो dq इज इक्वल टू एरिया इंटू dh लिखा. Also theoretical velocity through orifice is the standard formula. So theoretical velocity is given by the v is equal to under root of 2gh. This is one formula which you need to remember. FM1 में आपने सीखा. So now discharge through orifice per second. So now if you want to find out the discharge through orifice, इस particular orifice से कितना discharge हो रहा है find out करना है, तो discharge through orifice per second, discharge is per second na? So that is dq is equal to this one cd, correct, into area of the orifice into theoretical velocity. This is the formula where cd is nothing but coefficient of discharge
multiplied by area of the orifice is written here, and theoretical velocity. Now you can see discharge through orifice is equal to coefficient of discharge CdA, area of the orifice small a आपको पता है, and theoretical velocity is 2gh. Correct है? So you got dq is equal to cd into a into under root of 2gh, that is nothing but discharge through orifice से ही. ठीक है? So this is the volume of liquid leaving the tank. So therefore discharge through orifice in a small time interval dt is equal to, so that means now this is discharge हो गया through orifice, but in a time interval of dt कितना होगा, multiplied by dt. So dq is equal to cd into a into under root of 2gh into dt. ठीक है? So as the volume of the liquid leaving the tank is equal to the volume of the liquid flowing through orifice in time dt. So proper से understand करो, as the volume of liquid leaving the tank, जो टैंक से जो लिक्विड बाहर जा रहा है, that is equal to the volume of the liquid which is flowing through the orifice. ऐसा कुछ सिनेरियो है क्या कि बाहर से इधर से पानी गिर रहा है? हो सकता है ना कि मतलब ये जो टैंक है इससे जो भी लिक्विड बाहर जा रहा है दैट इज इक्वल टू जो ऑरिफाइस से बाहर जा रहा है उतना ही है, या दूसरा कुछ ऑरिफाइस इधर है तो इधर से भी पानी जा रहा है या ओवरफ्लो होके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो टैंक से जो भी पानी बाहर जा रहा है दैट इज इक्वल टू जितना ऑरिफाइस से बाहर जा रहा है. करेक्ट है ना? तो दोनों आपके पास है. सो डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफाइस इन स्मॉल, ओके, volume of the liquid leaving the tank is equal to the volume of the liquid flowing through orifice in time dt. ठीक है? So we have a into minus dh, so that is what I have written here. This is the volume of liquid leaving the tank. कितना बाहर जा रहा है टैंक से, a into minus dh. माइनस क्यों लिया है? क्योंकि उधर हाइट कम हो रहा है. करेक्ट है ना? नेगेटिव साइन इज इंसर्टेड बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ द टाइम हेड ऑन द ऑरिफाइस डिक्रीजेस, कम हो रहा है ना, हेड धीरे धीरे कम होता था, इसलिए माइनस साइन लिया है. ठीक है? इज इक्वल टू दिस इज द थ्रू ऑरिफाइस कितना डिस्चार्ज हो रहा है, इधर लिखा है देखो, सी डी इंटू ए इंटू रूट टी जी एच इंटू डी टी. सो यू गॉट दिस, इक्वेट किया दोनों. सो बेसिकली यू इक्वेटेड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. ओनली थिंग इज हियर आई टेकन माइनस बिकॉज डी एच रिड्यूस हो रहा है. ठीक है? सो ये माइनस ए डी एच इज इक्वल टू सी डी ए इंटू रूट टू जी एच इंटू डी टी. ठीक है? सो नाउ ऑब्वियसली आई नीड टाइम फाइंड आउट करना, बिकॉज द केस वन इज ओनली टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टीइंग द वेरिंग एट टैंक. करेक्ट? सो डी टी एल एच एस में रखता हूँ, बाकी सबको आर एच एस में लेके आता हूँ. दैट इज माइनस ए डी एच डिवाइडेड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच. ठीक है? और डी टी इधर जो h है ना इधर, उसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ. तो इसको बाहर निकाला तो h टू द पावर ऑफ 1/2 होता है. इसको न्यूमरेटर पे लेके गए तो h टू द पावर ऑफ -1/2 होता है. करेक्ट है ना? सो डी टी इज इक्वल टू माइनस ए डी एच डिवाइडेड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच था. इधर माइनस ए इंटू सेम रहेगा, डी एच भी रहेगा, सिर्फ ये जो h है इधर से बाहर निकाला और ऊपर लेके आया. दैट इज h टू द पावर ऑफ -1/2 डिवाइडेड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी. ठीक है? सो नाउ अभी देखो जो भी है इट इज हैपनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्मॉल dt में. करेक्ट है? दैट इज स्मॉल dh, स्मॉल पोर्शन में. इफ यू वांट टू डू इट फॉर एंटायर टैंक, जितना भी पानी है फ्रॉम h1 टू h2 फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, फॉर दैट वन यू नीड टू टेक इंटीग्रेशन. यू नीड टू अप्लाई द इंटीग्रेशन फॉर दिस इक्वेशन. करेक्ट है? एंड गिव द लिमिट टू h1 टू h2. So by integrating the above equation, this one, between the limits h1 and h2, you can find this is small time dt. So if you integrate this equation and give the limit to h1 h2, you will find out capital T. ठीक है? चलो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन डाल रहा हूँ. See, integration and all, it is a basic, you already know, you studied from 12th standard. So I'm not going into deep into that integration part and all. ठीक है? Basic जो भी है वो मैं समझाता हूँ. So by integrating the above equation, okay, from t is obtained as, okay, integration लगाया. So that is this dt के लिए integration, both LHS RHS with integration, and here same this for this equation integration, but limit is h1 to h2. Only thing is I removed minus sign, I taken outside. So now you can see here integration of dt is nothing but t, correct, is equal to minus
h1 to h2 ये h to the power minus 1 by 2 सेम cd into a into root 2g into dh. सिर्फ माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, यू कैन स्किप दिस स्टेप. नेक्स्ट t इज इक्वल टू, अभी क्या है, सी कांस्टेंट सब बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कुछ ज़्यादा ये नहीं है, सबको बाहर निकालता हूँ. ओनली मैटर्स इज h विच वेरीज है, dh करेक्ट है, h1 h2 वेरी होता है एंड t इज वेरी हो रहा है, टाइम वेरी होता है. तो एट प्रेजेंट राइट हैंड साइड में एरिया इज कॉमन, इट इज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ दैट कंटेनर और टैंक. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द ऑरिफाइस दिस कांस्टेंट है, g इज कांस्टेंट है. सो ये सब बाहर निकाल दिया. सो a c d a रूट 2g सब बाहर निकाल दिया, यू कैन सी माइनस a इंटू सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g, h1 टू h2 सिर्फ ये बचा h to the power minus 1 by 2 into dh. Now I have to integrate only h to the power of minus 1 by 2 into dh. Okay, this is t is equal to minus a cd into a into root 2g, same raka. Now what I'm going to do is I'm going to integrate this one. H to the power of minus 1 by 2 is nothing but h to the power of minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. So integration लगाया और limit ऐसे रखा. So t is equal to minus a into cd into a into root 2g, same रखा. So you can, if you take the LCM and all, you can see h to the power minus 1 by 2 plus 1 is nothing but 1 by 2. एक स्टेप स्किप किया हूँ, इसका अगर आपने LCM लिया तो h to the power of 1 by 2 आएगा and h to the power of 1 by 2 can be written as root h. Similarly here it is 1 by 2 आएगा, so 1 by 2 लिखा हूँ, ठीक है. So limit ऐसे रहेगा h1 to h2. So now you can see t same, दिस डिनोमिनेटर में 1 by 2 है, अगर ये न्यूमिनेटर में लेके गए तो 2 हो जाता है. सो दिस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस 2a लिखा हूँ डिवाइड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g. सो दिस इज रूट h, एक ही बचा है क्योंकि 2 ऊपर चला गया. रूट h अभी लिमिट लगाया तो दिस h ना, तो फर्स्ट लिमिट लगाता हूँ तो h2 माइनस h1 होता है. सो दिस इज रूट h2 माइनस रूट h1, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी आई रिटर्न हियर 2a रूट h1 माइनस h2. व्हाट आई डिड इज जस्ट मल्टीप्लिके माइनस को ये कर दिया, तो माइनस इंटू दिस थिंग माइनस रूट h2 इधर आया, दिस माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस रूट h1, तो प्रॉपर से रूट h1 माइनस रूट h2 लिखा है, माइनस गया डिवाइड बाई सी डी इंटू ए इंटू रूट 2g, बेसिक मैथमेटिक्स. सो नाउ फॉर एम्प्टीइंग द टैंक, अभी हमारा अल्टीमेटली गोल क्या था, टोटल एम्प्टीइंग द टैंक. So for emptying the tank completely, obviously देखो अभी आप डायग्राम देखा ना, तो H1 इधर है, H2 इधर है. अगर आपको empty करना है तो empty doesn't mean empty means H2 is here zero, करेक्ट है ना, पूरा पानी खत्म होना है, H2 is 0 meters, करेक्ट है ना. So you substitute H2 is equal to 0. So you can see for emptying the tank completely H2 is equal to 0. So you substitute H2 is equal to 0. So your formula becomes capital T is equal to 2a into root h1 divided by cd into a into root 2g. This is the equation to emptying the tank completely. ठीक है, case 1, that is time required for emptying a tank through an small opening. समझ में आया? So once again it's important derivation है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक आपको सिर्फ इधर थोड़ा इंटीग्रेशन आपको आना है. क्लियर है? होप आपको समझ में आया. आई विल डू द सेकेंड केस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो, थैंक यू.